ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் மூன்றாவது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 14. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் தேர்ட் ஸ்கந்தா சாப்டர் 14. திதி அம்மையார் கருவுறுதல். ஸ்ரீ சுக உவாச்ச நிஷம்ய கௌஷார வினோபவர்ணிதாம் ஹரே கதாம் காரண சூகராத்மனः புனः ஸ பப்ரச்ச தமுத்யதாஞ்சலிः न चाति तृप्तो विदुरो धृतव्रतः. विदुर उवाच तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुमा तस्य चोद्धरतक्षोणीं स्वदंष्ट्राग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्माद्धेतोरभून्मृदः. मैत्रेय उवाच साधु वीरत्वया पृष्टम् अवतारः कथां हरेः यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाशविशातनीं ययोतानपदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः मृत्यो कृत्वैव मूर्ध्न्यङ्घ्रीम् आरुरोह हरे पदम् अतात्राभीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामनुपृच्छतां दितिर्दाक्ष्यायनि क्षत्तर्मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामा चकमे सन्ध्यायां हृच्छयार्दिता इष्ट्वाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचत्यर्क आसीनम् अग्न्यकारे समाहितं दितिरुवाच एष मां त्वत्कृते विद्वन् काम आतः शरासनः दुनोतीति धीनां विक्रम्य रम्भामिव मदङ्गजः तद्भवान् दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यायुङ्क्तामनुग्रहं भर्तर्याप्तोरुमानानां लोकानाविशते यशः पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते पुरा पिता नो भगवान् दक्षो दुहितृवत्सलः कं वृणीत वरं वत्स इत्यपृच्छत न पृथक् स विदित्वात्मजानाम्नो भावं सन्तानभावनः त्रयोदशाददास्तासां यास्ते शीलमनुव्रताः अथ मे कुरु कल्याण कामं कञ्जविलोचना आर्तोपसर्पणं भूमन्नमोघं हि महीयसी इति तां वीरमारीच कृपणा बहुभाषिणी प्रत्याहानुनयन् वाचा प्रवृत्तानङ्गकश्मला एष तेऽहं विदास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्या कामं न कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यतः सर्वाश्रमानुपाधाय स्वाश्रमेण कळत्रवान् व्यसनार्णवमत्येति जलया नैर्यथार्णवम् यामाहुरात्मनो ह्यर्थं श्रेयस्कामस्य मानिनि यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः यामाश्रित्येन्द्रियारातीन् दुर्जया नितराश्रमैः वयं जयेम हेलाभिर्दस्यून् दुर्गपतिर्यथा न वयं प्रभवस्तां त्वाम् अनुकर्तुं गृहेश्वरि अप्यायुषा वा कात्स्न्येन ये चान्ये गुणकृद्नवः
अतापि काममेतं ते प्रजात्यैकरवाण्यलं यथा मां नातिवोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणिह एतस्यां साध्विसन्ध्यायां भगवान् भूतभावनः परीतो भूतपर्षद्भिर्वृषेणाडति पूतराट् श्मशानचक्रानिलधूलिधूम्र विकीर्णविद्योतजटाकलापः भस्मावकुण्ठामलरुक्मदेहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्याधृतो नोत कश्चिद्विगर्ह्यः वयं व्रतैर्यश्चरणापविद्धाम् आशास्मद्हेजां बत भुक्तभोगाम् यस्यानवद्या चरितं मनीषिणो कृह्णन्त्यविद्यापटलं बिभित्सवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरद्गतिः सतां हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन् रतस्या विदुषः समीहितं यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितं ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या अहो विभूम्नश्चरितं विडम्बनम् मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया जग्राहवासो ब्रह्मर्षेर्वृषलीव गतत्रपा स विदित्वात भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तयातोपविवेशः अतोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायम्यवाग्यतः ध्यायञ्जजापविरजं ब्रह्मज्योतिः सनातनं दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्मावद्येन भारत उपसंगम्य विप्रर्षि मधो मुख्यप्यभाषत दितिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभोऽवधीत् रुद्रपतिर्हि भूतानां यस्याकरवमंहसं नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीडुषे शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे स न प्रसीदतां भामो भगवानुर्वनुग्रहः व्यादस्याप्यनुकम्प्यानां स्त्रीणां देव सतीपतिः मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्याशिषं लोक्याम् आशासानां प्रवेपति निवृत्तः सन्ध्या नियमो भार्यामाह प्रजापतिः कश्यप उवाच अप्रायत्याधात्मनस्ते दोषान्मौहूर्तिकाधुत मन्निदेशादिचारेण देवानां चातिहेलनात् भविष्यतस्तवा भद्रा वभद्रे जाटरादमौ लोकान् सपालां स्त्रींश्चण्डी
मुहुराघ्रन्दयिष्यतः प्राणिनां हन्यमानानां दीनानामकृताघसां स्त्रीणां निगृह्यमानानां कोपितेषु महात्मसु तथा विश्वेश्वर क्रुद्धो भगवान् लोकभावनः हनिष्यत्यवतीर्यासौ यथा ध्रीन् शतपर्वदृक् दितिरुवाच वदं भगवता साक्षात् सुनो बोधारबाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धाद् ब्राह्मणाद्विभो न ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूतभयदस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति यां यां योनिमसौ गतः कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सद्य प्रत्यवमर्शनात् भगवत्युरुमानाश्च भवे मय्यपि चाधरात् पुत्रस्यैव तु पुत्राणां भवितैकः सतां मतः गास्यन्ति यद्यशुद्धं भगवत्यशशासमं योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैराधिभिरात्मानं यश्चीलम् अनुवर्तितुम् यत्प्रसादादिथं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं स स्वदृग्भगवान्यस्य तोष्यतेऽनन्यया दृशा स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतामहिष्टः प्रवृत्तभक्त्या ह्यनुभाविताशये निवेश्य वैकुण्ठमिमं विहास्यति अलं पटशीलधरो गुणाकरो हृष्टः परद्या व्यतितो दुःखितेषु अभूतशत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैधाकिकं तापमिवोढुराजः अन्तर्बहिश्चामलमब्जनेत्रं स्वपूरुषेश्चानुगृहीतरूपम् पौत्रस्तव शीललनाललामं द्रष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननं मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रम् अमोधत दितिर्भृशाम् पुत्रयोश्च वदं कृष्णाद् विदित्वासीन्महामनाः. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் 3வது ஸ்கந்தத்தில் 14வது அத்தியாயம் சம்பூர்ணம். கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே.